Hello everyone, I welcome all of you to OPSC Wallah. आज आम गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करवा इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर स्पीच जहाँ रेड फोर्ट को आम डिकोड करवा सो ये टॉपिक को आसवा पूर्वर बुझा पूर्वर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्पीच प्राइम मिनिस्टर का स्पीच रो नौटा इंपोर्टेंट समरी ऊपर मु डिस्कशन करी जमती कि विकसित भारत 2047 एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन यूसीसी जहाँ को आम कहूचे यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटा आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होइछि देन कॉन्सर्न ओवर बांग्लादेश वन नेशन वन इलेक्शन कमिटमेंट टू रिफॉर्म स्पेस सेक्टर एंड स्टार्टअप रिफॉर्म रिवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी ये नौटा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आज मैं डिस्कस करी सो ये टॉपिक को आसिया पूर्व यार सिग्निफिकेंस कोन आपको मैं कोठी यूटिलाइज करि परिबा करंट अफेयर रे डिफरेंट डिफरेंट सेशन नेला बेले मु आपन मन को बारंबार कहिछि कि अनेक गुरे न्यूज़पेपर मैगजीन सहित हमर कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन बा नेशनल लेवल जदी कोनोसी कन्वेंशन होउची बा कोनोसी मिनिस्ट्री रिपोर्ट आसुची बा कोनोसी डिग्निटरीज लाइक प्राइम मिनिस्टर हेले प्रेसिडेंट हेले बा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हेले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेले एमानक स्पीच रो रिलेवेंस मते बहुत अधिक थाए तो ये नौटा जाक पॉइंट हम ओसीएस मेन सहित बहुत रिलेवेंट एवं ओतप्रोत भाव में जड़ित ये नौटा पॉइंट को हमें बुझिवा दरकार ये नौटा पॉइंट को हमें कोनोसी ना कोनोसी जगह जीएस 1 2 3 4 कोंतु बा एसए कोंतु बा जदी आपण मानकर ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अछि ऑप्शनल सोशियोलॉजी अछि ऑप्शनल ज्योग्राफी अछि पॉलिटिकल साइंस अछि इकोनॉमिक्स अछि ये सबु जगह में नौटा पॉइंट को यूटिलाइज करि परिबा अपार्ट फ्रॉम जनरल स्टडीज ताले कोठी कोठी कहले रिलेवेंस कोन रहिला जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल पेपर्स किछि सिलेक्टिव ऑप्शनल बा डिमांडिंग ऑप्शनल पेपर देन आउ कोठी रहिला आपनकर एसए पेपर ये सबु जगह ये नौटा पॉइंट को डिस्कशन करि परिबे सो दीज आर हाइलाइट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट प्रथमे एटी हम डिस्कस करबा अबाउट विकसित भारत 2047 प्राइम मिनिस्टर कहले कि जदि 40 करोड़ इंडियंस ड्यूरिंग 1947 इफ they were able to give independence to the country then why not 140 crore people those who are living today सेमाने काहे कि इंडिया कोटे विकसित भारत बा डेवलप्ड नेशन में परिणत करि परिबे जदि 40 कोटी लोक भारत को स्वाधीनता देई परिले ताले वर्तमान 140 कोटी लोक भारत को कोटे डेवलप्ड भारत बा विकसित भारत रे काहे कि परिणत करि परिबेनी जोटा डिस्कशन होइछि कोथरे ना विकसित भारत 2047 ने 2047 दिस इज द डेडलाइन दिस इज द टाइम फ्रेम दिया जाउछि कि या सुधा बाय 2047 will achieve the status of Vikshit Bharat, will achieve the status of developed nation. So developed nation हवा पहले आपको को फैक्टर के इंपोर्टेंस दवा दरकार ये गोटिए पॉइंट रे आपनकर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी गवर्नेंस सिक्योरिटी इश्यूज एमती अनेक गुडे सब टॉपिक के भीतर आसी जाउची सो विकसित भारत रे हमर कोन डेवलपमेंट रे आवश्यकता रहिछि बा जदि हम डेवलप्ड कंट्री इंडिया को करिया चाहौचे तले को फैक्टर को इंपोर्टेंस दवा दरकार ना प्रथमे इंपोर्टेंस दवा दरकार हम एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर काको ना एग्रीकल्चर वा प्राइमरी सेक्टर then second is your manufacturing sector by industry third is service sector then external sector बाजा हम एक्सपोर्ट कहूचे हमको एक्सपोर्ट इंक्रीज करिया पई पड़िबो इंपोर्ट डिक्रीज करिया पई पड़िबो येला डेवलप्ड नेशन होआ पई हेले हमको प्रोडक्शन आवश्यकता रहिछि एक्सेसिव प्रोडक्शन आवश्यकता रहिछि आज पर डिमांड सप्लाई अधिक होबा दरकार प्लस in the international market India जो in different type of Indian products they have a huge demand in the international market हमको से मार्केट को ग्रैब करिवार अछि थ्रू एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट को रिड्यूस करिवार अछि तेबे ही हम डेवलप्ड नेशन नै परिबा प्रोडक्शन इंक्रीज होबा सहित एठी कोन करबा हमें प्रोडक्शन इंक्रीज होबा सहित हमें देखिबा केमति फार्मर रे इनकम मधे डबल हे परिबा लाइक डबलिंग फार्मर्स इनकम केमति हम ध्यान दे परिबा फार्मर सुसाइड को केमति हम रिड्यूस करि परिबा ये तो गला जो पॉइंट गुडा ऊपर वर्तमान मु डिस्कस कली ए माने को रिलेटेड पॉइंट दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ए माने को रिलेटेड दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ना सो एटी प्रोडक्शन अधिक हो एही पॉइंट रा हम देखली दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन यदि प्रोडक्शन होची देन ऑटोमेटिकली जीडीपी इंक्रीज हो मोर द प्रोडक्शन मोर इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मोर द जीडीपी आ व्यतीत आउ किछ अदर एस्पेक्ट मध्ये अछि जदि हम डेवलप नेशन चाहौते हमें ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस चैप्टर इकोनॉमिक्स रे पढिला हम डिस्कशन करथिली जदि हम गोटे डेवलप नेशन चाहौचे ताले खाली जीडीपी जीएनपी को फोकस करि परिबे आउ का को फोकस करिया दरकार ना लाइक जीएनएच ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ये फैक्टर गुडा को मध्ये ध्यान देवा दरकार
सो विकसित भारत रा कथा जतबेला हम कहते डेवलप्ड नेशन रा कथा कहूचे इकोनॉमिक एस्पेक्ट सहित हमको आउ किछि सोशल एस्पेक्ट ऊपर मध्ये ध्यान देवा दरकार कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज लाइक पॉवर्टी इराडिकेशन मालन्यूट्रिशन हंगर या ऊपर डिस्कशन करवा दरकार या सहित आउ कहा ऊपर डिस्कशन करवा दरकार या व्यतीत आउ कोन डिस्कशन करवा दरकार ना लाइक जस्टिस सोशल जस्टिस कौन दरकार हमको ना वी नीड सोशल जस्टिस है यार आवश्यकता रही सो देयर आर डिफरेंट एंगल्स इंक्लूडिंग योर हैप्पीनेस इंडेक्स ये सब पॉइंट हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह डिस्कशन करछे डिफरेंट क्लास मानकर डिस्कशन करछे प्लस आगामी क्लास मानकर तो मेंस में करबे सेटी मध्ये डिस्कस करबे नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट इज एन एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन समस्ते रिसेंट न्यूज जानिथिबे कोलकाता वुमेन डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस जोटा आसिला ताकू एड्रेस करिके प्राइम मिनिस्टर टी एड्रेस करछन अबाउट एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन ताकू रिड्यूस करिया को पड़ियो सो दिस इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट बाकी हमें कहबा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन तक हमें डिक्रीज करिया दरकार ए सेम टाइप ऑफ टॉपिक गोटे लास्ट हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में डिस्कशन करी समस्त जानिथिबे कि प्रत्येक सप्ताह रे संडे 11टा बेले रविवार 11टा बेले हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस मंडे रु सैटरडे पर्यंत जहां एडिटोरियल रहिला से सबुर क्लास हमर अपलोड होचे YouTube चैनल ले ताको समस्त देखि परिबे व्हिच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली सो एठी सेटी मध्ये मो डिस्कशन करितली अबाउट एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ वुमेन एम्पावरमेंट इज इंपोर्टेंट काहे कि एटे में जेंडर बेस्ड वायलेंस कथा कहूचे बा एठी हमें सोशल जस्टिस कथा कहूचे एठी हमें जस्टिस कहबा जस्टिस इन टर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड जस्टिस वुमेन आर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहि परिबा वल्नरेबल सेक्शन कहि परिबा डिपेंडिंग ऑन द जेंडर सो एठी एम्पावरमेंट ऊपर प्राइम मिनिस्टर रेफर करूचंती टू रिड्यूस एट्रोसिटीज अगेंस्ट ये टॉपिक हमर कोन अछि ना इंडियन सोसाइटी रे ये टॉपिक ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करिवा सो वुमेन एम्पावरमेंट करिया पई बा एट्रोसिटी को रोकिया पई हम को फैक्टर ऊपर ध्यान दे परिबा प्रथम फैक्टर जहां पर हम ध्यान दे परिबा दैट इज वेरी स्ट्रिंजेंट लॉज हमको डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज दरकार जेमति कि एंटी सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड लॉ अछि वी हैव क्रिमिनल कोड्स एंड मेनी मोर देन आउ कोन दरकार हमको नाउ वी नीड इंस्टीट्यूशंस वी नीड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक फास्ट ट्रैक कोर्ट लाइक हमको कोन दरकार ना फास्ट ट्रैक कोर्ट जोटी जल्दी केस गुडा कर समाधान नै परिबो आउ कोन लाइक और जोटा महिला कमिशन अछि वुमेन कमिशन so human right based NGOs human right based civil societies NGOs civil society मानकर मध्ये आवश्यकता अछि जो माने थिंक टैंक समान ताकर पॉलिसी इनपुट एटी प्रोवाइड करिवे ना देन एकेडमिक्स ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट ये समस्त अंगर कोलैबोरेटिव अप्रोच रे ही हम केवल एट्रोसिटी को बंद करि परिबा अगेंस्ट वुमेन देन कमिंग टू थर्ड पॉइंट ऑन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पॉइंट ऊपर ऑलरेडी मु डिस्कस करिछि बहुत जगह रे हमें जदि इंडिया रे देखबा ना इंडिया रे क्रिमिनल कोड ता होछि यूनिफॉर्म इन इंडिया क्रिमिनल कोड इज यूनिफॉर्म मींस गोटे लोक को भी कैटेगरी को बिलोंग करू हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्रिमिनल कोड दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू एवरीवन बट जदि हमें सिविल कोड देखिबा सिविल कोड रे के आसुछि कोन आसुछि सिविल कोड रे ना सिविल कोड रे आसुछि लाइक लॉज रिलेटेड टू मैरिज सक्सेशन इनहेरिटेंस है अडॉप्शन ये सब आसुछि सिविल कोड रे ये जो सिविल कोड हमें देखुचे दैट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन एटा कोड मेंशन हेछि इट इज मेंशन इन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोड आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा मेंशन हेछि एंड द सिविल कोड इज नॉट यूनिफॉर्म व्हेयर एज क्रिमिनल कोड इज यूनिफॉर्म एठी सिविल कोड को यूनिफॉर्म करिया पई इंडिकेशन दिया जाउछि सिविल कोड को यूनिफॉर्म फॉर ऑल द कम्युनिटी फॉर ऑल द रिलीजियस कम्युनिटी करिया पई एठी इंडिकेशन दिया जाउछि तापर हम नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा कॉन्सर्न ओवर बांग्लादेश नाउ बांग्लादेश रे कोन चलछि समस्त जानि छथि बांग्लादेश रे एठी कोन चलछि समस्त जानि छथि सो एठी क्वेश्चन कहा ऊपर बा ये पॉइंट कहा पर रेज करा जाउछि ना ऑन द माइनॉरिटीज स्पेशली को माने जो माने हिंदू माइनॉरिटी अछि सो हमें कहू कि भारत वर्तमान विश्वगुरु होबा को जाउछि विश्वगुरु होबार अर्थ कोन श्री अरविंद मध्य कहिथिले दिन आसीबो जोटी भारत जननी समग्र विश्व भारत निजर स्कंधरे बहन करियो एक्जाक्टली सेम जिनस वर्तमान पॉलिटिकल लीडरशिप मध्य डिस्कस करूचंती जहा को कहआ जाउछि कोन ना विश्वगुरु तो हमें विश्वगुरु होबा को चाहूचे बा होबा को जाउचे इन द फ्यूचर सेते बेले रीजनल बैलेंस बा रीजनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी along with global peace and prosperity it should be our responsibility as a aspiring country to be the Vishwaguru as an aspiring country to be the Vishwaguru regional peace regional development
ग्लोबल पीस और ग्लोबल डेवलपमेंट मेंटेन करिया मध्ये हमर दायित्व। सो एटी बांग्लादेश रे जो माने माइनॉरिटी अछंती सेमान को ऊपर जो रिलीजियस परसिक्यूशन होउची धर्म भित्तिक अत्याचार होउची से अत्याचार को बंद करिया पई हम एटी वॉइस रेस करिया पई चाहूचे। प्लस रेफ्यूजी माने मध्ये अधिक रु अधिक अछंती बांग्लादेश टू इंडिया। रेफ्यूजी आसीबा द्वारा कोन होतना पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाउची। देयर इज अ क्लास बिटवीन इंडियंस एंड द माइग्रेंट्स। इंडियन एवं माइग्रेंट मानक भितर हमको एटी क्लास देखिया पड़छ। सो ये सब को मध्ये रिड्यूस करबा दिस इज द नीड ऑफ द आवर। देन नेक्स्ट एटी डिस्कस कले कहा परे ना वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन यार अर्थ कोन एट ए टाइम सारा देश रे इलेक्शन हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड रे हेले एटी अधिक रु अधिक इकोनॉमिक बर्डन पड़ुछ का परे ना स्टेट मानक ऊपर स्टेट एक्सचेकर ऊपर बा गवर्नमेंट एक्सचेकर ऊपर। दैट्स व्हाई वन नेशन वन इलेक्शन कथा डिस्कशन है। Then the next is commitment to reform. Which type of reform? Specifically economic reform. जदि हम economic reform करूने ताले economic development ही परिबन। Just like जेमति banking nationalization हितला during 1969 1969 नो banking nationalization जेमति हितला 14 टा बैंक को nationalize करथिले से समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थिले। सो एठी economic reform को commitment economic reform हेले ही economic development हबो। जेमति 1991 LPG मॉडल आस्ता LPG मॉडल आसिला परे रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डेवलपमेंट इंडिया रे बढ़ी जाइछि। Exactly same point को एटी प्राइम मिनिस्टर फोकस करछंती फॉर अ रिफॉर्म इन द इकोनॉमिक सेक्टर। को सेक्टर रे करि परिबा ना प्राइमरी सेक्टर रिफॉर्म रिक्वायर सेकेंडरी सेक्टर रे दरकार टर्शियरी सेक्टर रे दरकार। जेमति हम जस्ट आफ्टर 1947 इंडिया डिक्लेयर्ड इंडस्ट्री एज इट्स प्राइम मूविंग फोर्स। 2002 वी चेंज द प्राइम मूविंग फोर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर। नाउ सर्विस सेक्टर को मध्ये हम इंपोर्टेंस दोचे। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईटी एंड आईटीएस सर्विसेज टू द फॉरेन कंट्रीज। एसईजेड अछि हम पाके स्पेशल इकोनॉमिक जोन जोटे हम प्रोडक्शन बढ़िया पई चाहूचे। So economic reform including taxation reform, banking reform, everything included under this. जो reform मान को ऊपर हम economics class रे discussion करछे एटी सब प्रकार जिंस एटी applicable एटी प्रत्येक पॉइंट एटी applicable. So that is related to commitment to reform. Now next point को हम आसीबा that is on space sector and startup most important. Space sector रे हमको बर्तन अनेक गुणे नुवा नुवा वेंचर वा नुवा नुवा स्टार्टअप देखिया पई मिलुछि। इटा ना इस सेक्टर जिते डेवलप हबो गोटे कंट्री को हम सेते डेवलप बोली कहै। दिस इज द टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर। कोन एटा दिस इज टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर। इटा हम टेक्नोलॉजी की यूज करछे को टेक्नोलॉजी को ना स्पेस टेक्नोलॉजी को एठी हम यूज करछे ताको स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करछे। और स्टार्टअप कोन ऑलरेडी कहली एई सेक्टर रे स्पेसिफिकली स्टार्टअप गुडा को बढ़ी जाउछि। एई सेक्टर रे स्टार्टअप पडुछि प्लस यदि हम देखिबा यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम इंपोर्टेंस देबा को चाहूचे यदि सेकेंडरी सेक्टर को इंप्रूव करिया पई चाहूचे ताले नुवा स्टार्टअप मान को प्रमोट करिया दरकार। नुवा स्टार्टअप मान को प्रमोट करिया पई हमको स्टार्टअप प्रमोशन रिलेटेड लॉज मानकर आवश्यकता रहिछि एवं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़िवार आवश्यकता रहिछि प्लस क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करिवार आवश्यकता रहिछि। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जेमति लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर से सब को बढ़िवार मध्ये आवश्यकता रहिछि। ये गला कोथरे ना स्टार्टअप रे। देयर इज रिवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन। एटी पीएम कहले कि भारत रु स्टूडेंट मानो को विदेश जीवार आवश्यकता नहीं पाठ पढ़िया आमे भारत रे एजुकेशन सिस्टम को शिक्षा व्यवस्था को एमती बनैबा विदेश रु स्टूडेंट माने आसीबे भारत रे पाठ पढ़िया। जेमती जदी आमे इंडिया रो एजुकेशनल हिस्ट्री देखिबा अनेक गुडे नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंपोर्टेंस थिले अनेक गुडे नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंपोर्टेंस थिले जोटी की विदेश रु लोक माने आस्तले पाठ पढ़िया। एक्जेक्टली सेम पॉइंट ऊपर एठी प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करथुन जहा को नालंदा स्टाइल ऑफ एजुकेशन बोली कहा जाय। समस्त मन परिवे फ्रेज मेंस रे लिखिबे नालंदा स्टाइल ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर जोटी इंडिया रो एजुकेशन स्ट्रक्चर को इंडिया रो एजुकेशनल सिस्टम को हम एमती डेवलप करबा जहा द्वारा फॉरेन स्टूडेंट माने आसबे इंडिया को पढ़िया पाए। सो नेक्स्ट किछ दिन भीतर 75,000 अप्रोक्सीमेटली 75,000 सीट ओपन होबो मेडिकल स्टूडेंट मानक। So this is also a revolution in the field of education. In the same way, in the field of agricultural education, legal education, medical education, engineering or technical education, India can prove its supremacy. Already, जब हम देखिए India history, then the contribution of India into the entire world's education system can never be neglected, can never be discounted by any country. You may talk about invention of zero. आपण trigonometry कथा कहंतु, mensuration कथा कहंतु, chemistry, physics, biology, mathematics, to each and every field of science, to each and every field of humanities, law, ये सब को इंडियन मानकर कंट्रीब्यूशन कौन से कंट्री मना करि पारे। सो ये सेम जिंस जोटा हमर एंशिएंट टाइम पीरियड रे जो एजुकेशन सिस्टम थिला सेटा को हम एटी रिवाइव करिया पई चाहूचे बा रिवोल्यूशनाइज करिया पई चाहूचे। एंड द लास्ट वन इज नेशनल सिक्योरिटी। यार इंपोर्टेंस समस्त जानि छथि व्हाई नेशनल सिक्योरिटी इज इंपोर्टेंट। नेशनल सिक्योरिटी जतेबेले गोटे स्टेट रो दीटा फंक्शन मु कहितली दीटा फंक्शन गोटे स्टेट रो सबले मन रखिबे गोटे हला पुलिस स्टेट आ गोटे हला वेलफेयर स्टेट। गोटे हला पुलिस स्टेट आ गोटे हला वेलफेयर स्टेट। पुलिस स्टेट रे कोन होची
ना पुलिस स्टेट एठी हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची कोन करूची स्टेट ना स्टेट हमको एठी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची कोटो ना फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एनिमी को एनिमी ही पारे ना इनसाइड ही पारे बा आउटसाइड ही पारे बा कोनोसी नेचुरल कैलामिटी ही पारे बा कोनोसी प्रकार रा नेचुरल कैलामिटी ही पारे लाइक मु कहि फनी 1999 सुपर साइक्लोन लैंडस्लाइड रिसेंट इला फ्लड ये सब मध्ये हमको प्रोटेक्शन दवा कहर दैत ना स्टेट रो फंक्शन नाउ इनसाइड एनिमी मु कोइ भी की एटी क्या प्रोटेक्शन दवा ना हमको एलडब्ल्यू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बा मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी गुड इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सो एटु हमको प्रोटेक्शन दवा आउटसाइड एनिमी की जदि कोइ भी कोनोसी प्रकार अनफ्रेंडली नेबर लाइक चाइना पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री जदि समान इंडिया ऊपर कोनोसी प्रकार अटैक करिया पई इंडिया सिक्योरिटी ब्रीच करिया पई इंडिया पीस ऑफ डेवलपमेंट को ब्रीच करिया पई बात को रोकिया पई चेष्टा करथंदी ताले स्टेट रो फंक्शन कोन हमको प्रोटेक्शन दो जेतबे स्टेट हमको प्रोटेक्शन दिए ता कहले पुलिस स्टेट जेतबे स्टेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे ताको कोन कहआ जाय ता कहले वेलफेयर स्टेट जेमति के मु कहली रास्ता घाट पानी बिजुली इत्यादि इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटी ये सब जेतबे स्टेट हमको प्रोवाइड करची ताको हम कहू वेलफेयर स्टेट सो एठी जेतबे व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट नेशनल सिक्योरिटी इट मींस इज टॉकिंग अबाउट द पुलिस स्टेट से पुलिस स्टेट को स्ट्रांग करिया पई चाहउछन कोन चाहउछन ना इंडिया एज अ स्टेट पुलिस स्टेट बा स्ट्रांग पुलिस स्टेट होवा दरकार जोटी इट विल टेक ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज टू टेक इट्स ओन सिटीजंस ये गला नेशनल सिक्योरिटी रो कथा सो जे जो नॉट अ पॉइंट ऑफ प्राइम वर्तमान डिस्कशन कले ये नॉट अ पॉइंट कहा ऊपर डिस्कस करा बेसिकली यदि हमें देखिबा दिस 9 पॉइंट दे रिवॉल्व अराउंड दिस टू कांसेप्ट ऑफ पुलिस स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट कहा ऊपर कहली पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट पुलिस स्टेट रे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन वेलफेयर स्टेट रे वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट ओनली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एटी द प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट योर कंसर्न ओवर बांग्लादेश एटी हमें कहा पर डिस्कशन करिया चाहूचे ना माइनॉरिटी सेक्शन को प्रोटेक्ट करिया पई चाहूचे सो दिस इज द स्टेप टुवर्ड्स इंडिया बिकमिंग विश्वगुरु देन एटी आउ कोन डिस्कस करले ना टू स्टॉप एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन मानक अगेंस्ट एट्रोसिटी को बंद करिया पई चाहूचे सो दिस इज अबाउट सोशल जस्टिस ये पॉइंट हमको सोशल जस्टिस कथा कहला ये पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो कथा कहला यूसीसी अगेन इट डिस्कस्ड अबाउट इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी बा सोशल जस्टिस रो कथा कहला देन जदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कंसर्न ओवर बांग्लादेश एटा तो बुझेइली वर्तमान विश्वगुरु रो कथा वन नेशन वन इलेक्शन एटी पॉलिटिकल रिफॉर्म बा इलेक्शन रिफॉर्म बा दिस गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म रो कथा डिस्कशन कले कमिटमेंट टू रिफॉर्म एटी ऑल टाइप ऑफ रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म एजुकेशनल रिफॉर्म सब ऊपर डिस्कशन कले नाउ स्पेस सेक्टर ऑफ स्टार्टअप एटी एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर डिस्कशन कले बा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऊपर हिंट देले रिवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन एटी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव सोशल सेक्टर रे बेसिकली एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट हेल्थ केयर असंती या ऊपर फोकस करा गला देन नेशनल सिक्योरिटी एटी सिक्योरिटी कंसर्न ऊपर फोकस करा गला वर्तमान देखो जो ब्रॉड पॉइंट मानक ऊपर मु डिस्कशन कली से माने केते दूर रिलेवेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस मेंस रो सिलेबस सहित ताको देखो एटा केते दूर रिलेवेंट एवं को सेक्शन को आछन जीएस 1 2 3 4 रो को टॉपिक को सब टॉपिक को आछन ये कथा मु बारंबार कहिछि एडिटोरियल एनालिसिस रे मध्ये कहिछि जहां पढुचे हमें जानिबा दरकार कि से पाठटा हम पई कोन पई इंपोर्टेंट ताको हमें कोड यूटिलाइज करिबा आंसर शीट रे जीएस 1 2 3 4 रो को सब्जेक्ट रे यूटिलाइज करिबा को टॉपिक रे एवं को सब टॉपिक रे यूटिलाइज करिबा तो नॉट अ पॉइंट को देखंतु ऑल द 9 पॉइंट्स आर इंपोर्टेंट कोनोसी गोटे टॉपिक हमें मिस करि परिबानी करंट डेवलपमेंट करंट रिलेटेड इश्यूज रे अछि सो आको अकॉर्डिंगली यूज करिवे समस्त पढिबे बुझिबे नॉट एट द पॉइंट को मन रखिबे यदि पढिला परे तेबे भी किछि कार डाउट आसुची त डेफिनेटली कम बैक टू मी विथ द कमेंट सेक्शन ने निजर डाउट रखिबे एंड आई विल गेट बैक ता ऊपर निश्चित भाव में डिस्कशन करिबे सो आपको नोट करंतु पढंतु बुझंतु एवं योर आंसर शीट रे यूज करंतु इन मेंस एग्जामिनेशन so that's all for this session we'll discuss more in the next class thank you very much